acids and bases show, in which we did acid plus base gives salt plus water, right? Acid plus base gives salt plus water. If you have metal oxide, in case you don't have a base, if you react acid with metal oxide, this also gives you salt plus water because metal oxide is basic in nature. If you have non-metal oxide and you react it with base, you again get salt plus water because non-metal oxides are acidic in nature. ये सारे रिएक्शन सिमिलरली प्रोसीड करते हैं. एसिड को अगर मेटल के साथ आप रिएक्ट करते हो, यू गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, एसिड प्लस मेटल. मेटल के कंपाउंड्स बेसिक होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ बेस अगर आप मेटल के साथ उसको रिएक्ट करते हो, यू विल गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, राइट. एंड अगर आपके पास बेस में कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट है, तो आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड. सो ये 5 मेन रिएक्शंस हैं जिनके ऊपर बेस्ड आपका पूरा चैप्टर है, सारे रिएक्शंस है और आज की असाइनमेंट भी. टेक आउट योर असाइनमेंट. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज there was an experiment being carried out in chemistry laboratory. Below is the outcome of the reaction. अभी आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास टेस्ट ट्यूब में है जिंक ग्रैन्यूल्स और इसमें आपने पुट किया है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4 और रिएक्शन हो रहा है और कोई गैस इवॉल्व हो रही है जिसको इसने नाम दिया है X गैस. और डिलीवरी ट्यूब से जब ये गैस आप सोप सॉल्यूशन के अंदर पास करवा रहे हो, तो यू गेटिंग पॉप्स आउट, राइट. ये आपका डायग्राम में ऑब्जर्वेशन है. नाउ द फर्स्ट इक्वेशन हियर इज व्हाट इज X हियर. मैं आपसे खुद पूछूंगी, जो क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट से मुझे वो आंसर देगा. Who is Avinash Kansal? You can unmute your mic, come forward and give me the answers. Avinash, is Avinash there? Raise your hand. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. और भी पूछ लूं, बाकी भी आता है. Oh, good. ठीक है, so stay here. Second question says, why do zinc produce X gas when they react with dilute sulfuric acid? Zinc जब dilute sulfuric acid के साथ react कर रहा है, तो ये गैस क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? Because zinc is displaced. Yes, zinc is placed. Very good. Hydrogen. Zinc is placed hydrogen. Zinc replace hydrogen. When zinc react with the बोलो बेटा. इग्नोर अदर्स. आप बताओ, आप जो बोलना चाहते हो, दूसरों की तरफ मत, आप बोलो. question please. Don't laugh. Please repeat the question. Why do zinc produce X gas when they react with dilute sulfuric acid? This is the thing. कि zinc जब dilute sulfuric acid के साथ react कर रहा है, so why is it producing X gas? जो आपने बोला, कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन गैस. Second answer. Zinc is the metal and H2SO4 is the acid. That's why it produces hydrogen gas. मतलब मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा. Yes, ma'am. Okay.
एक थोड़ा सा और इलेबोरेटेड, दिस इज ट्रू, हमने ये पढ़ा एसिड, मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बट जो रीजन है ये गैस देने का उसको आप इन टर्म्स पे भी बोल सकते हो। रिएक्टिविटी सीरीज आती है सबको, ऑल ऑफ यू नो द रिएक्टिविटी सीरीज, यस और नो? रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड है, दैट इज सपोज्ड टू बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। आपके पास जिंक है, दैट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, ये H पॉजिटिव आयंस होती हैं, H2SO4। मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, मेटल टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो जो भी हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड है मेटल, वो सारे बहुत रिएक्टिव हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को देके हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से H में और फिर H2 में कन्वर्ट कर देगी। H पॉजिटिव है ना, इसको न्यूट्रल होना है, तो न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो कौन दे रहा है इसको, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको मेटल। तो मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड गेन्स दैट इलेक्ट्रॉन, वो न्यूट्रलाइज होता है, लेकिन इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज single atomic hydrogen, it is very reactive, it exists as H2 gas. So this is the thing, जो हाइड्रोजन पर प्लेस है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो उसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और वो एसिड के H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन देके उसको H2 गैस में कन्वर्ट कर देता है, वही गैस जो कि इसमें इवॉल्व की है। तो एक्चुअल रीजन ये है, ये तो आपने लर्न किया ना कि एसिड में जब भी, सॉरी, आप मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट करते हैं, मेटल प्लस एसिड, दिस गिव्स यू salt plus hydrogen. This is what you've learned, जो 5 equations मैंने बताई, but reason behind it that it is able to displace, let's say displace hydrogen from sulfuric acid and liberate it as hydrogen gas. ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देके H पॉजिटिव को H में कन्वर्ट करके it is able to liberate it as hydrogen gas. Okay. Part is, if instead of dilute sulfuric acid, dilute HCl were used, then would the outcome be same or different? Tell me, अगर sulfuric acid के place में if we use HCl, क्या reaction same होगा या नहीं होगा? Who is Karanpreet Singh? Tell me. Hanji? It will be same. It will be same. What are the products we get? We will get zinc chloride and H2 evolve. Okay. What is the formula of zinc chloride? ZnCl2. What is the valency of zinc? 2 positive. Very good. So this gives you ZnCl2 plus hydrogen. Same चीज है, इसमें भी HCl acid है, इसमें भी metal more reactive than hydrogen और वो उसको displace कर सकता है. Now एक question मैं पूछती हूँ आपसे, who is propylene core? Propylene core. Section. Okay. My question from you is, which metals cannot replace hydrogen from acids? Ma'am, please repeat the question. Which metal cannot replace hydrogen from acids? Ma'am, copper. One more.
reactive जो होंगे And silver. silver. One more. I'm happy with your answer, but if you know it, one more. Gold. Gold. Very good. Please sir. तो आपने रिएक्टिविटी बेटा आपने रिएक्टिविटी सीरीज की है जिसको हम याद रखते हैं अपने तो Don't speak, please. केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा तीखे से पकाता है ठीक है ये सारे ज्यादा रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से आपने किस वे में लर्न किया रिएक्टिविटी सीरीज को सिमिलरली और सम अदर mnemonic you've used have you learned reactivity series कैसे लर्न किया है ऐसे ही लर्न किया है या कोई और तरीके से लर्न किया Please stop calling me a zebra. okay fine ठीक है you've learned it now after hydrogen you can learn this word or keep this in your mind this is chapa सिर्फ एक वर्ड बिलो हाइड्रोजन वाले एलिमेंट्स के लिए दिस इज कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर प्लैटिनम एंड गोल्ड दिस गिव्स यू एलिमेंट्स व्हिच आर present below hydrogen and they won't be able to displace H positive ion from acid. They are less reactive. Just remember this word kappa. और सबसे कॉमनली जो हम ज्वेलरी में यूज करते हैं सिल्वर यूज करते हैं गोल्ड यूज करते हैं प्लैटिनम बैंड्स होते हैं तो ये क्यों यूज किया जाता है बिकॉज ये हमारे स्किन फ्रेंडली है क्यों क्योंकि रिएक्ट नहीं करता आप अगर आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स होते कोई उसमें आयरन मिक्स्ड होते हैं तो वो रस्ट कर जाते हैं स्किन इन्फेक्शंस कर जाते हैं ठीक है जो बाकी मेटल्स के ये मेटल इसीलिए भी कॉस्टली है बिकॉज ये अनरिएक्टिव तो ज्वेलरी में एक तो ठीक है कि ये थोड़े लस्ट्रस है इसीलिए लेकिन अदरवाइज अनरिएक्टिव होने की वजह से ज्वेलरी में प्रैक्टिस किया जाता है ठीक है विल कम बैक टू क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज व्हाई when a candle was brought near to the gas a pop sound was produced ये मुझे बताएगा who's Manjot Singh sunflower section is Manjot there yes please come beta come forward unmute your mic को unmute करो मैंने म्यूट किया हुआ है you can do that हाँ जी आपको वो क्वेश्चन पता लगा क्या पूछा मैंने नहीं पता आपके पास असाइनमेंट है नहीं है अभी ठीक है अभी पिक्चर देख रहे हो आप इस पिक्चर में क्या हो रहा है जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या हो रहा है इस पिक्चर में बोलो मुझे नहीं समझ आ रहा बताओ कैसे बताओ रिएक्शन हो रहा है कौन कौन रिएक्ट कर रहा है आपस में जिंक को देख पा रहे हो जिंक है उसमें लिखा हुआ है Zn किस चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड तो जिंक आपको पता है मेटल है कि नॉन मेटल है बोलो मेटल तो आप जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलने चाहिए इसमें बेटे मंजोत को पूछा है मैंने बोलो
अब दो चीजों को रिएक्ट करेगा तो वो किसी चीज के साथ तो कंबाइन करेगा ना, या नहीं करेगा इसमें? ऐसे जरूरी नहीं है कि करे, पर यहाँ पर करेगा। क्या बनेगा? बोलो बेटा, गलत बोलोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी गैस है, तो हमने बोला था हाइड्रोजन गैस है। फिर इसने पूछा था कि HCl के साथ ये रिएक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्या प्रोडक्ट्स देगा जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा? Zinc plus HCl will give you, tell me, ZnCl2 plus हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसने बोला ये जो गैस यहां से निकली है और कैंडल को इसके साथ हमने यहाँ पर देखो पिक्चर में आपको देखो कैंडल वहां लगा दी तो पॉप साउंड आई। ये पॉप साउंड का क्या मतलब है, क्यों ये पॉप साउंड सुनाई दी? बर्निंग विच गैस? आंसर लिखे तो नहीं असाइनमेंट में? I cannot see from that part. Okay, fine, ठीक है। So ये हाइड्रोजन गैस जो है that burns with a pop sound। ठीक है, वेरी गुड। चलो बैठो बेटे, ध्यान से सुनना है सबने बेटा, ये पास सबके नेम्स की लिस्ट है, राइट? चलो, सो ये कहता है कि पॉप साउंड क्यों आती है? पॉप साउंड कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट? इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस। Then next is write down the whole experiment in chemical equation. This is the only thing. यहाँ पर कुछ और कुछ नहीं हो रहा, बस आप जब लिखते हो तो आपको इसमें स्टेट्स लिख देनी होती हैं कि किस मीडियम में है, सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, गैस है, स्टेट्स पूरी विद बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिख देनी होती है। Come to the next question. It says below the reaction of acid with metal carbonate. This says, what are the products of the reaction between an acid and a metal carbonate and how are they identified experimentally? So whenever you react any acid with the metal carbonate, you get salt plus water plus carbon dioxide, right? ना अब अभी सेम आपको यहाँ पर भी एक पिक्चर दी है जिसमें आपके पास dilute HCl is put in sodium carbonate. Can you tell me which gas is being evolved here? Which gas? Lotus house, please, house or whatever section you call it. हाँ जी, which gas is being evolved? सब बता दोगे या किसी पर्टिकुलर को पूछूं? Which is the gas which is being evolved in this tube? Very good. What is the common name of the calcium hydroxide solution? Calcium hydroxide solution का common name पता है? It's lime water. Next, how gas X reacts with calcium hydroxide solution? Carbon dioxide plus calcium hydroxide. What are the products which you're going to get? क्या बनेगा इससे? बोलो। इससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, a white precipitate जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, राइट?
So carbon dioxide plus calcium hydroxide gives you white precipitate of calcium carbonate. Then equation is, why does X gas evolve during the reaction of an acid and metal carbonate? इसमें भी y पूछा तो ठीक है, एसिड और मेटल कार्बोनेट को जब भी आप रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट एंड वाटर तो बनेगा, लेकिन ये जो कार्बोनेट आयन है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ठीक है, सारों के पास तो नहीं होगा, बाकी जो नॉर्मल बेसिस होते हैं अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तब तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल सकती, बिकॉज इट इज कार्बोनेट बेस, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड will get released. Okay, F is what happens if more X gas passes through calcium hydroxide solution. अगर आप और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करते रहते हो तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके साथ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके वाटर की प्रेजेंस में this gives you calcium bicarbonate. ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन होती है HCO3 नेगेटिव आयन और कैल्शियम है Ca2 पॉजिटिव आयन, तो इससे बन जाता है ये फॉर्मूला। राइट इट डाउन। अगर आप एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, दिस इज आंसर फॉर F पार्ट। एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करते हो तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड combines with calcium carbonate which was earlier formed, जो पिछली स्लाइड पे आपने देखा था, and in the presence of water this gives you calcium bicarbonate. Okay, रोज सेक्शन से पूछते हैं। तो सनी गोयल, सनी आया है आज? ओके, और हरलीन कौर आ जाओ बेटा। Okay, so you have to give the reason. The first question is why curd or other sour foodstuffs should not be kept in copper or brass vessels. क्यों हमें कोई भी सार चीज या कर्ड को कॉपर वेसल में नहीं रखना चाहिए? नहीं सुनाई दिया बेटा। Because they can react with it and form poisonous substance. Okay, आप मुझे क्लासिफाई करके बताओ जो 5 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमने किए हैं उसमें से किस कैटेगरी में ये फॉल करेगा? जो हमने यहाँ किया ना उसमें आप मुझे क्लासिफाई करके बताओ इसमें से क्या होगा, बिकॉज आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी जनरल आंसर, ठीक है, इट इज नॉट इनकरेक्ट आंसर, बट अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिक होना हो तो आपके माइंड में क्या आता है कि क्या हो रहा होगा यहाँ पर, इनमें से क्या रिएक्शन हो रहा होगा? चेक इट आउट। Acid plus metal into produces salt plus metal. ठीक है, एसिड है आपका, कौन सा एसिड है अभी ये बताओ? कर्ड में कौन सा एसिड है? Lactic acid. वेरी गुड, गुड, लेट्स क्लैप फॉर हर। मुझे अच्छा लगा उसका आंसर, कभी कर दो, यू वोंट बी चार्ज्ड फॉर इट। ओके, चलो, नेक्स्ट इज why is water not added to the acid to make a dilute solution of acid? मुझे मनिंदर सिंह है इसी सेक्शन में। अरे बेटा, why water not added to the acid solution?
Second part, third question, second part. आपको क्वेश्चन समझ आया क्या पूछा मैंने बेटा? Why is water not added to acid to make the fluid solution of this? हाँ जी, give me the answer. मैं बता। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी आपको ऐसा किसी ने बोला है कि एसिड में वाटर नहीं ऐड करते हैं, वाटर में एसिड ऐड करते हैं? वाटर में एसिड क्यों? एसिड में वाटर क्यों नहीं ऐड करते? Because of heat. Because it is an exothermic reaction. It releases huge amount of heat. से आप जल सकते हो। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब में काम करोगे, अगर एसिड में वाटर डाल दिया डाइल्यूट करने के लिए, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो बैठ। Because by adding water to concentrated acid, exothermic reaction takes place, which releases huge amounts of energy, and this could be dangerous. So it is not advised to add water to acid. Rather, water में आप drop wise acid add कर सकते हो, ताकि water इसको absorb कर सके और बहुत ज़्यादा exothermic reaction ना हो। ठीक है? Move to the next question. Why are acids called electrolytes? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, किसको पता? रेज योर हैंड। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कभी डॉक्टर ने नहीं दिया, वो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में आता है, उसको भी इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जब डायरिया डायसेंट्री का कुछ प्रॉब्लम होता है, डिहाइड्रेट कर जाती है बॉडी, तो एक आजकल तो ऑरेंज फ्लेवर में और सारा वो इलेक्ट्रोलाइट किया है कभी? उसको इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आयंस होती है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो जब आप किसी सॉल्यूशन में, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में अगर डिसोसिएट हो जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था? Why are acids called electrolytes? Because they dissociate into ions. You can write the answer. Acids are called electrolytes because they dissociate into ions in water and conduct electricity. Okay, move to the next question. It says, Peter added X to copper oxide, blue in color, and now it turned to blue-green color. First question is, X is acid or base? कौन बताएगा? उस अनमोल सिंह सिद्धू, अनमोल सिंह, अनमोल संपला सेक्शन नहीं है।
बता सकते हैं वैसे। मयंक गोयल, मयंक की नहीं है? सबको पता लग गया था क्या मैं आज बुलाने वाली हूँ? अच्छा सुनो, तो मैं बता देती हूँ क्या क्वेश्चन में ये बोल रहा है। ये कहता है X to copper oxide, which is blue in color, and now it turns blue green color. तो किसके साथ मिलके वो ब्लू ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा? वो चेंज होगा, दिस इज मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक, तो अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी उसका कलर चेंज होगा। बेसिस कंबाइन करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो एसिड, and it says why did the color change to blue green? क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं, the acid reacts with copper oxide to form copper salt. Acid plus base gives you salt. तो यहाँ पर कॉपर का सॉल्ट बन जाएगा, which will give you blue color. ठीक है? When is copper oxide is a metal oxide. हाँ जी. Why are metal oxides are also called basic oxides? Because they react with acids. Metal oxides are basic. देखो एसिड और बेस हमेशा आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन दो एसिड्स होंगे तो वो कंबाइन करेंगे, रिएक्ट नहीं होंगे, वो मिक्स हो जाएंगे। लेकिन रिएक्शन का मतलब है कि हाँ मेरा केटायन तुम्हारे एनायन के साथ कंबाइन कर देगा और मेरा एनायन तुम्हारे केटायन के साथ ऐसे करके, ये होता है रिएक्शन इनके बीच में। लेकिन कॉम्बिनेशन मीन्स कि वो है ठीक है, साथ में आपने मिक्स कर दिए तो ठीक है, मिक्स है, वो कंबाइंड है लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही। तो मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक है, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास an experiment was carried out in which this sodium chloride solution reacts or dissolves in water. अच्छा जी, what is the process called? ये जो आपके इसमें दिया है, आपकी बुक में भी दिया होगा, दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? एक्वस NaCl। NaCl और वाटर को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो, शायद मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब लेस मेटालिक और लेस नॉन मेटालिक आयन है वो न्यूट्रलाइज होगी। H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस करके H बनाएगा और फिर H2 गैस। ठीक है, रिडक्शन कहाँ होती है? कैथोड पे। और फिर Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन शो करेगा और ये बनेगा Cl2 गैस एट एनोड, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन happens at anode, reduction happens at cathode. ठीक है, then हाँ, और साथ में मैंने बता दी NaOH सोल्यूशन इसमें रह जाता है। H2 गैस कैथोड पे, क्लोरीन गैस एनोड पे और NaOH सोल्यूशन रह जाता है। What are products of this process? यही है, क्लोरीन हो गया, hydrogen gas हो गया और NaOH. These are the three products which you are getting here. And what would be the reaction of X with dry slaked lime? Dry slaked lime का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का X है, इसमें जो एनोड पे जो आपकी गैस मिल रही है which is क्लोरीन, राइट? एनोड पे क्लोरीन हमें मिल रही थी, यहाँ मैंने आपको दिखाया एनोड पे हमारे पास क्लोरीन मिल रही है, तो X वो गैस है जो एनोड पे मिल रही है एंड दिस गिव्स यू CaO Cl2. दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर।
ठीक है, कैसे मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन ऐड करके you're getting bleaching powder. ठीक है, come to 7th question. It says, हाँ जी, the color of aqueous solution of copper sulfate turns colorless when piece of lead is added to it. This is true. And lead is more reactive than copper and hence displaces copper from its salt solution. ये reactivity series से आप देख सकते हो, lead is more reactive than copper. So both statements are true and reason also. तो A आ जाएगा इसके लिए. Then as hydrogen gas is not evolved in zinc when zinc reacts with nitric acid. This is also true और आपको ये याद रखनी है ये चीज. Nitric acid oxidizes hydrogen gas produced to water and itself gets reduced. Both these statements are true और आपको याद रखना है. This makes an important question. ठीक है, ये आपको पूछा जाता है, तो इसमें दोनों statements true हैं. Then it says, which of the following are properties of an acid? They are better in taste. They react with metals to produce hydrogen gas. They are easily soluble in water. So, isme, I think they are Q and R are the correct statements. And last question is, a solution of an acid with pH 5.1 is given. Which of the following can be done to increase its pH? आपके पास एक solution है, उसका pH है 5. That means it is acidic in nature. So what you'll do to keep it acidic or to increase its pH? Increase its pH. हाँ, तो options are first is add distilled water to it. Second is add a solution of different acid with pH 5.8. And third is add few drops of base with an unknown pH. तो base तो उसको neutralize कर देगा अगर आपको उसकी pH increase करनी है. Then you need to add distilled water to it. And you need to add few drops of base with unknown. No, you need to add solution of different acid with pH 5.8. So this would make the answer C, which is combination of first and second part. So this chapter is done. कोई भी अगर doubt हो तो next class में हम उसको discuss कर लेंगे. ठीक है? Thank you so much. Yes, students. So in the previous class, we have started with arithmetic progression. We have done question on the basis of nth term of an AP, right? Yes. What is the formula for students? Nth term of an AP. Who will tell me? What is the formula for nth term of an AP? चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ, आप लोग नहीं बताते तो. गुरपिंदर कौर. हाँ जी, गुरपिंदर कौर. Where is she? Please. 10th daffodils. Yes. माइक ऑन कीजिए बेटा, अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को. यस. n by 2 a n minus formula for nth term of an AP. What is the formula for nth term of an AP? a plus n minus 1 d. A plus n minus 1 into d. What is the formula for sum of n terms of an AP? What is the formula? N by 2 2a n minus 1 into d, right? So we have done the question on the basis of these formulas. Everyone has got the assignment today? अब बच्चों के पास assignment है? yes Right. Open your assignment. हाँ जी बोलिए कुछ.
बोल रहे थे कोई स्टूडेंट? Right. So first question of the assignment. The sum of 20 odd natural numbers. What is the sum of 20 odd natural number? What is the first odd natural number, students? What is the first odd natural number? One. Next is 2, 3, 5, hello. Please stop down. Right? Now this is an AP. Everyone has a common difference of. What is the common difference? 2. 2. 3 minus 1, that is 2. What is the first term? What is the first term? 1. What is n here? And What is 20? Beta question read karo na, first 20 odd natural numbers. So now you have to find sum of first 20 odd natural numbers. Right? So what will be S20? N by 2, 2a plus n minus 1 into. Is it clear, students? Solve कर लो इसको. 2 plus 19 into. So this comes out to be n into 40, which is. Is it clear, students? So choice C will be the right answer. C choice will be the right answer. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है बेटा इसमें? राइट. हाँ जी बोलिए. Any doubt, students? No, sir. So formula is clear. How to apply? Come to the next question, students. If the sum of the first n terms of an AP. Now sum of n terms of an AP is given. This question is very important question, students. Very important. बहुत frequently आता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन. If the sum of the first n terms of an AP is this, then its nth term means what you have to find? Nth term. Nth term will be an. How to do this? What you will do in this, first you will put n equal to 1. So this becomes S1. That will become 2 multiplied by 1 square plus 5 into. So this becomes 2 plus 5. That is. What is S1, students? What is the meaning of S1? Sum of one term. Sum of first term. First term is only 1. तो ये आपके पास first term आ गई. When you will take S2, you will put n as 2. What is the meaning of that? Sum of first two terms. Please remember this step. Very important. Maximum student make the mistake in this. What they do? जब 1 put करते हैं तो A1 लेते हैं, जब 2 put करते हैं तो A2, which is not A2. It is the sum of A1 and A2. So S1 is 7. What will be S2? 2 into 2 square plus 5 into. Which is 18. Now what will be the value of A2, students? S1 is, यानी कि A1 आपके पास आ गया 7. A1 is 7. A1 plus A2 is 18. What will be A2? What is the value of A2? हाँ जी बेटा A1 की वैल्यू पुट करो तो A2 आ जाएगा. A1 की वैल्यू 7 plus A2 equal to 18. So A2 will be equal to
right? So you got A1 7, A2 as 11. Now can you find out the common difference? Yes. A2 minus A1, which will be 11 minus 7, that is 4. Is it clear, students? So you have to go step by step, right? Now what you will do? We have to find an. What will be an? A plus n minus 1 including. What is a? 7. Right? Very, very important question, students. This question can be there in the MCQs. This question can be there in the 2 marker, 3 marker, 4 marker, any. But this is not in the 4, 5 marker, but 3 marker it can be. Right? It's a very, very, very important question. So please note down this question. लास्ट पेज ओपन करूं बेटा मैं ये देख लीजिए किस तरह से करना है फर्स्ट यू नीड टू पुट n as 1 so you will get s1 then you need to put n as 2 to get s2 which is the sum of first term and second term. From there you find a1 and a2, then find d and then find an. Is this clear, students? Any doubt? Any doubt, बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स. अच्छा ऑप्शन ए आ जाएगी ना इसकी राइट. क्वेश्चन नंबर 3. If the common difference of an AP is 5, then what is A18 minus? We have to find this. Can you try this? Can you try, students? Yes. Please do this. Please do. Why you front benchers are not doing 10th row center line? Beta, first you need to find out A18, then A13, then subtract. How will find out A18? Who will tell me? Please raise your hand. तो बताएगा बेटा. Anyone? A plus 17D. A plus 17D. Yes. The value of this will be A plus 17D. What is the value of A13? A plus 12D. Very good. So what you will do? Solve this. Yes. They will cancel out. So this comes out to be equal to 5D, which is right, students? Any doubt? Option C will be the answer. Next question, students. बेटा कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी. फोर्थ क्वेश्चन बेटा. If 3k plus 2, 5k minus 3 and 4k plus 7 are 3 consecutive terms of an AP, then find the value of A. Student, one property you should remember. If A, B, C are consecutive terms of an AP. What is the meaning of consecutive, students? What is the meaning of consecutive? Who will tell me? बेटा consecutive का मतलब है साथ साथ. जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म या सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म. तो consecutive means साथ साथ. ठीक है. देन ये कंडीशन होती है बच्चों, नोट कर लो. 2B is equal to A plus C.
2b is equal to a plus b. अब ये कंडीशन आई कहाँ से है? देखिए, what will be the common difference between them? Second term minus first term होता है. And what will be the common difference between them? Third term minus second term. So when you shift b on this side, it become plus. When you shift a on that side, it become positive. So this becomes 2b equal to. तो ये कंडीशन आपकी आ जाती है स्टूडेंट. सो यू विल यूज दिस कंडीशन इन द क्वेश्चन नंबर 4. हाउ टू यूज दिस? द टर्म ऑफ द एपी आर right. So this is a, this is b, this is c. So 2 times of b is equal to a plus. Is this concept clear, students? अब जल्दी से सॉल्व करके एक की वैल्यू निकाल दो जरा. हाँ जी, हाँ जी, क्या आई है के की वैल्यू स्टूडेंट्स? 5 5 आ गई है. sir. Yes, sir. 5 आ गई जी. कैसे आई है देखिए जरा. तो जब ओपन करेंगे तो becomes 10k minus 6 is equal to 3 plus 4k, 7k plus 9. Right, students? So take 10k on the left side and 6 on the right side. So you got 3k equal to a equal to 15 by, which is a. Clear? Is it clear, students? Yes. Okay. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5. Sum of the AP is the first negative term. The AP is given to you this. You have to find which term of this AP will be the first negative term. You know how to do this question, students? Please do this. कुछ बच्चों ने नोट किया है. So what you can do, whatever will be the first negative terms, that will come after 0. So what we'll do, we'll check what is the 0 is the number, is the term of the AP, right? और 0 से जो next term होगी, that will be your first negative terms. So what you will do here, you will take 0 as an. A is given, B is given, A N is given. So you have to find the N. Please find N. Students, please find N. हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया. ये कितना आ गया बेटा? What is D? What is the value of D, students? -5. ठीक है जी. तो अब आपने फाइंड आउट करना है n. तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b. 1 minus 1 1 here. This becomes minus 5n plus 5. So minus 1 1 3 minus 5. So minus 1 1 8 equal to minus 5. Right? So what is the value of n? 118 by 5, which comes out to be 2 3. Is this clear, students?
So this comes out to be 23, 3 by 5. So what is the meaning of this? Can number of terms will be in the fraction? Number of terms cannot be in the fraction. So therefore 0 is not the term of this AP. Now what will be the next term then? So this is 23 and some part. So next term will be, and next term will be the first negative term, that will be 24th term. Is this clear? So next negative term, next term will be first negative term and that term will be 24th term. Very important question again, very frequently comes in the paper. Right, bacho? Now we move to the next question. Next question, the sum of the n terms of the AP. Now this AP is given to you students. Right, the sum of n terms of the series. Now, first of all, we have to check whether this is an AP or not. Now, what you have to do, factorize this and convert in the simplest form. Can you write this as, you make the prime factors, this will be 2. So these, there is a pair of 2, so hence we can write this as 2 root 2. Is it clear, bacho? It is an AP. Is this clear? Yeah. Now similarly, root 18 can be written as 2 into 3 into 3. Now pair of 3 is there, hence this can be written as 3 root 2. Similarly, root 32 can be written as 4 into 4 into 2. So pair of 4 is there, so hence it can be written as 4 root 2. So this becomes an AP. Then what is this series? Root 2 plus 2 root 2 plus 3 root 2 plus 4 root 2 and so. Now this is AP. We have to find the sum of n terms of in this AP. What is the A of this AP? What will be the common difference? 1 and Anji? Common difference will be 1 root. 1 root 2 means this, which is equal to again root 2. So now what will be the sum of n terms? N by 2, 2 times A plus n minus 1 into D. Right, bacho? So we can solve this. This becomes 2 root 2 plus root 2n minus root 2. Is it clear? So can I rub this? Now we have n by 2. 2 root 2 minus root 2, that will become root 2. So we got root 2n. So our root 2 will be common. And what we are left here? Now check the answer. What is the answer? Now answer is, okay. Now this is 2, this is root 2. This 2 can be written as root 2 into root 2. So this 1 root 2 will be cancelled out and our answer will be n into n plus 1 divided by 2. Clear, students? So this will be our final answer. Choice C will be the right choice. Please note down this question, student. All of you must note down this question.
बच्चों नोट डाउन, प्लीज डू इट फास्ट, कर लो जल्दी से, नोट करो जरा। Right, students, so we move on to the next question. Question number 7. The common difference of the AP. Is you have to find the common difference of the AP. And how will you find out? Very simple. ये first term है, this is second, this is third. So subtract second term minus first term, you will get common difference. So 1 minus 3b over 3. Right, students? So subtract this by taking LCM. This will be cancelled out. Minus 3b over 3. So it will be, so common difference will comes out to be minus p, which is a choice C. Right? Next question, students. Please you do yourself this question. Question 8. The 10th term of the AP. Very, very simple question, students. Please do this one. Find the 10th term of the AP. Everything is given in the question. Just you need to find out the 10th term of the AP. Apply the formula AN equal to A plus N minus 1 into D. हाँ जी, हो गया स्टूडेंट्स? A plus N minus 1 into D. A is given 5, D is given. What will be the value of D, students? A option. Option. Let's see that it is A option. 5, D, and is 10. So A 10 will be equal to A plus 9D. So that will be 5 plus 9 into 3. Yes, 32. So that will be the A option. Very good, students. Similarly, do the next one. In an AP, A is given, D is given, AN is also given. Please find N. No talking, beta, no talking. 10th rows, no talking. यार मैं बोले जा रहा हूँ बच्चों, बोलना नहीं है, फिर मेरे सामने बैठ के बोले जा रहे हो. 10th rows, middle row, second bench, middle student. Please stand up.
हाँ जी बेटा, बताइए क्या प्रॉब्लम है? Why you are talking? Have you done the question? क्वेश्चन हो गया बेटा आपका? हाँ जी बताइए क्या किया आपने? बेटा कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं? I am talking about question number 9. Have you done it? Ma'am, please check his notebook. Whether he has done in question number 9 or not. Sit down. Students, how to do the question number 9? A is given minus 7.2. B is given 3.6. And An is given 7.2. You have to find N. So apply the formula. An is equal to A plus N minus 1 into D. Right, students? So take 7.2 on this side equal to N minus 1 into 3.6. So add this. This becomes 14.4 and 3.6 will come in the denominator and this is equal to N minus 1. इसको कट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 4 पे कट हो जाएगा. So N minus 1 is 4. So N equal to 4 plus N will be 5. So this will be your answer. Right? Any doubt in this question? Next question, students. Question number 10. In an AP, A is 3.5. B is 0. N is 101. What will be An? What will be N, students? 3.5. Because C is 0. So therefore, whatever the N you take, nth term will remain the same. Very good. Come to the next question, student. 11th question. The list of number minus 10, minus 6, minus 2, 2 dash is now check whether this is an AP or not. I am giving the name accordingly. Check whether this is an AP or not. AP. What is the common difference? 4. 4. So which choice? Choice कौन सी होगी बच्चों? B option. Right? Next question. Question number 12. The 11th term of the AP. This AP is given. You have to find the 11th term of this AP. Please do this question, students. Very good question. Yes, we have to find the 11th term. That will be A plus 10D. What is D here? 4. Huh? 4 कौन है 4? Well, how it is 4? What is D, student? Second term minus 5 by 2 minus 5. So this comes out to be minus 5 by 2 plus 5. इसको solve करेंगे बेटा.
So 2 minus 5 plus 10. So this comes out to be 5 by 2. So the common difference comes out to be 5 by 2. So we have to find 11 term. That will be A plus 10D. What is A here? Plus 10 times 5 by 2, which is so answer will be 20. Clear students? Any doubts? Very simple question था बेटा. बस D थोड़ा सा इसका ध्यान से निकाल लेना. Otherwise there is no problem in the question. Next question students, assertion reason. First assertion, the value of n if A equal to 10. If A equal to 10, B equal to 5, An equal to 95, he has given is 16. So find the n. If it is 16, then it will be true. If it is not 16, then the assertion will be false. So find out the n in this case. Please find out the n. A is given, D is given, An is given. Just apply the basic formula of nth term. You'll get the value of n. Anji, what is the value of n? 18. 18. 18 आ रही है सब चीजें? Yeah. An equal to A plus n minus 1 into D. So 95 equal to 10 plus 5n minus 5. So 95 equal to 5 plus 5n. Take 5 on that side. $90 upon 5, which is 18. So hence this is 18 लिखा है बेटा मैंने. इसने तो 16 दिया है ना, तो ये false हो गया ना statement. Yes, sir. The formula of the general term of an EP is this. So assertion false, reason true. So hence which choice? D option. Right, students? So D option will be the correct answer. Right? So next assertion reason. Haji, the 11th term of an AP. Please find out its 11th term. A is given 7. What will be D? 2. We have to check A11. That is A plus 10D. What is A? So it comes out to be 27, right? Yeah. So that is true. First statement is true. Now come to the second statement. If Sn is the sum of the first n terms of an AP, then if nth term An is given by, is this true or false? It is true. How? Do you remember first question? What was S2 minus S1? Have we done that? Yeah. This is n. If n is 2, n minus 1, 1. S2 minus S1 equal to A2. Beta, this is true. Right? So this is true and assertion is also true. But it is not the correct explanation. So hence the answer will be C. So remaining question we'll do in the next class. Right, students? So we have class till 10:30. Yes or no? Yes.
Okay, thank you, students. Thanks a lot, teachers.